Assalamu alaikum. So let us start with a new chapter, work and energy. So first of all, we need to know कि work होता क्या है. So scalar product of force and displacement in the direction of force is called work. और जो formula हम इस्तेमाल करते हैं work के लिए that is W equals to F dot D. यानी कि दो vectors हैं, first is the force, second vector is the displacement और इन दोनों का जो dot product है that is work. अब डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि जो रिजल्टेंट यानी जो प्रोडक्ट आता है दैट इज ऑलवेज अ स्केलर यानी वर्क का मैग्नीट्यूड तो है बट इट लैक्स एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन और इसके मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज एफ डी कॉज ऑफ थीटा यानी इस कॉज ऑफ थीटा को आप देख सकते हैं डायग्राम के एक सर्टेन ब्लॉक के ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा और जो ब्लॉक है एज अ रिजल्ट इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट तो इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के उस कंपोनेंट का प्रोडक्ट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है दैट इज एफ कॉस ऑफ थीटा इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज वर्क सो वर्क इज एफ डी cos of theta. Next we have the properties of work. So first property is that it is a scalar quantity. क्योंकि पहले हमने कहा है कि जो वर्क है that is scalar product यानी डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो हमें रिजल्टेंट मिलता है that is always a scalar quantity. Secondly हम डिफरेंट एंगल्स की बात करते हैं और इसके अंदर पहले हमारे पास आता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल का मतलब है कि द एंगल शुड बी लेसर देन 90 डिग्रीज. तो इन एंगल्स के ऊपर जो वर्क है वी से दैट इट इज पॉजिटिव वर्क. नेक्स्ट फॉर ऑब्ट्यूज एंगल्स ऐसे एंगल्स हैं जो कि 90 से बड़े होते हैं अप टू 180 डिग्रीज. सो इन एंगल्स के लिए जो वर्क होता है दैट इज नेगेटिव. thirdly for right angle यानी exactly 90 degrees के लिए जो वर्क है that is 0. And last, the property of work is its unit, or SI unit of work, it is Newton meters or simply joules. अब यहाँ हमारे पास आती है एक numerical problem. So the statement of the problem is that a body moves 10 meters along a straight line under the action of a force of 5 newtons. यानी displacement उन्होंने दी है 10 meters की और जो force है that is 5 newtons and the work done is 25 joules. We have to find the angle which the force makes with the displacement in the direction of motion of the body. यानी हमें displacement पता है, हमें force पता है, work भी पता है, we have to find the angle theta. So first option is 0 degrees, 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees. So the correct option is option C, 60 degrees. Now we see the solution to this problem. हम कहते हैं कि W equals to FD cos of theta. तो cos of theta होगा W over FD और सिंपल थीटा के लिए हम cos को दूसरी साइड लेके जाके cos इनवर्स कर देंगे. So cos inverse of work which is 25 or force times displacement that is 10 times 5 it is cos inverse of 0.5 that is 60 degrees. Moving forwards हमारे पास different cases आते हैं work done के जिनमें से फर्स्ट केस हम कहते हैं कि द एंगल इज 0 डिग्रीज. अब cos of 0 1 है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1. सो द वर्क डन इज maximum for the same amount of force and displacement. An example of this angle is work done by the horizontal force in pushing a body along a horizontal straight path. यानी एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, एंगल 0 है तो वर्क जो है दैट इज मैक्सिमम. सेकेंडली द एंगल इज 90 डिग्रीज. So at 90 degrees the work done is 0 or minimum. यानी जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करती है तो हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज ऑलवेज रेडियल यानी इट इज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अलोंग द टेंजेंट. तो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज एंड cos of 90 is 0. सो वर्क डन इज मिनिमम. थर्ड हमारे पास केस आता है कि द एंगल इज 180 डिग्रीज. इन दिस केस द वर्क डन इज नेगेटिव मैक्सिमम. The example is raising a body in the gravitational field. अब raising का मतलब है कि जो हमारी force है that is जो displacement हम cover करा रहे हैं that is upwards while the force of gravity is downwards. Angle is 180 degrees. The work done by the force of gravity it is negative and maximum. So problem is there. A body is lifted up from a plane
placed on the surface of Earth, the work done by the gravity is. First option is positive, negative, can be either positive or negative, undeterminable without data. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नेगेटिव। जैसा कि हमने पीछे केसेस में देखा कि जो ग्रेविटी है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड वी आर लिफ्टिंग द थिंग अप अबव द प्लेन, यानी हम उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसे अपवर्ड डायरेक्शन में रख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, द एंगल इज 180 डिग्रीज एंड सिंस द cos of 180 is -1, so work is negative. Up next we have relations of work done, यानी डिफरेंट केसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। So, अगर एक कांस्टेंट फोर्स के साथ वर्क डन हो रहा है तो W इक्वल्स टू एफ टी कॉस ऑफ थीटा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यू केस इज वेरिएबल फोर्स, इसका हम सेपरेटली डिटेल में केस डिस्कस करेंगे। दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई कॉस ऑफ थीटा आई डेल्टा डी आई। यहाँ पे आई जो है दैट कैन रेंज फ्रॉम 1 अप टू n, यानी जितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस, एंगल्स या डिस्प्लेसमेंट्स हो उनके लिए फॉर्मूला यूज होता है। हम सबको ऐड करते हैं, सिग्मा इज अ साइन ऑफ समेशन, यानी हम इनको ऐड कर रहे हैं। थर्ड केस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें हम कहते हैं कि द वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर वर्क डन बाय अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज फॉर्मुलेटेड एज W इक्वल्स टू P डेल्टा V। स्प्रिंग के लिए हम यूज करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे x जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द स्प्रिंग और k जो है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर इलास्टिक बॉडीज के लिए हम यूज करते हैं हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। कैपेसिटर के लिए हम यूज करते हैं हाफ सी वी स्क्वायर और इंडक्टर के लिए हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पे सी जो है दैट इज कैपेसिटेंस, वी इज ए वोल्टेज, एल इज द इंडक्टेंस, आई इज द करंट। सो ये तमाम फॉर्मूला जो है खास तौर पे जो लेटर ऑन जो फॉर्मूला हमने नहीं अभी तक पढ़े, विल डिस्कस देम इन डिटेल इन दी रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। जबकि जो वेरिएबल फोर्स और वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह वाले जो हैं दीज रिमेनिंग थ्री फॉर्मूलाज, इन्हें हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो in the next slide we'll further discuss work and energy. Thank you.